ऐसे add to this. The last but not the least, but the amended part as well. ये हमारा ऐसे जो 800 है, that is the audit of financial statement in accordance with the special purpose framework, and 805, that is the what is 805? That is basically the audit of the single financial statement or the specific elements, accounts, or the items of financial statement that we have already covered. Now moving further, that is basically relates to the SA 810, that is engagement to report on a summary financial statement revise. तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे 810 डील करता है ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां बनती है व्हेन अंडरटेकिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच डिराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेस बाय दैट सेम ऑडिटर. What do summary financial statement क्या reflect करता है? तो summary financial statement reflect the historical financial information which is derived from the financial statement audited. Obviously it is summary financial statement, so it will contain less detail, but though still it providing the structured representation which is consistent with that provided by the financial statement of the entity's economic resources and obligation at the point in time or the changes over the period of time. तो ये दोनों को consider करता है, the point in time और जो भी changes है in the period of time. तो हम क्या बोलते हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड. Obviously it is summary financial statement, therefore it is contain the less detail but it's still providing the structured representation, provide करता है consistent with provided by the financial statement of the entity's economic resources, obligation for a point in time and the period in time or the period in time. Different laws and regulations may use different terminologies to describe such of historical financial information. Then comes the engagement acceptance. The auditor shall ordinarily accept an engagement to report on a summary financial statement in accordance with the essays only when the auditor has been engaged to conduct an audit in accordance with the essays of the financial statement from which the summary financial statement had derived. If the auditor has not also audited the financial statement, अगर आपने full financial statement की audit नहीं किए, then you cannot report on the summary financial statement पे reporting नहीं दे सकते हैं. The auditor shall do the necessary knowledge to discharge his responsibility in relation to the summary financial statement in accordance with this essays. Here lies the rationale behind the requirement of engagement to report on a summary financial statement shall ordinarily be accepted when the auditor has been engaged to conduct an audit of a financial statement from which the summary financial statement has been derived. Before accepting an engagement to report on a summary financial statement, then auditor क्या करेगा, FRF. यहाँ पे जो हम बोलते हैं यूजुअली कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कंप्लायंस होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. यहाँ पे थोड़े वर्डिंग चेंज हो जाएंगे. डिटरमाइन करना होगा, तो हम क्या बोलते हैं, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट रिपोर्ट ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किए जाएंगे, तो बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या देखेगा, डिटरमाइन वेदर जो है वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया डिटरमाइन करना होगा. हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया क्या एक्सेप्टेबल है. अप्लाइड क्राइटेरिया रेफर टू द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल. हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना होगा. हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना होगा. हमें डिटरमाइन करना होगा वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल. क्या अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो एक्सेप्टेबल है. हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा. व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज वी नीड टू डिटरमाइन. हमें डिटरमाइन करना होगा कि अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो एक्सेप्टेबल है. हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा. हमें डिटरमाइन करना होगा कि अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो आर एक्सेप्टेबल है. हमें डिटरमाइन करना होगा. हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा. व्हाट वी नीड टू डू दैट इज टू डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है. उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि
जो प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन नीड्स अप्लाइड क्राइटेरिया रेफर टू द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट। अप्लाइड क्राइटेरिया मतलब क्या है, वो क्राइटेरिया जो कि मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम। तो प्रिपरेशन जो भी प्रिपरेशन होगी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन की जो इंफॉर्मेशन नीड्स है of information needs that to be reflected in the summary financial statement so that they are consistent in all material respect with represent a fair summary of the audited financial, जो कि represent करे the fair summary of the audited financial statement because the summary financial statement by their nature contain aggregated information and the limited disclosure। because हम क्या बोलते हैं कि जो summary financial statement है, बिकॉज हम ये बोलते हैं कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बाय देयर नेचर दैट कंटेन द एग्रीड इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर होगा, there is an increased risk that they may not contain the information necessary as not to be misleading in the circumstances. This risk contain the information necessary। तो यहाँ पे दो चार चीजें हमें देखना होगा कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया है डिटरमाइन द अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल हो, और उसके अलावा और भी चीजें हमें देखनी होती है कि जो प्रिपरेशन की है मैनेजमेंट ने क्या अप्लाइड क्राइटेरिया रेफर टू द अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया मतलब कि जो अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। अप्लाइड क्राइटेरिया मतलब द क्राइटेरिया विच इज अप्लाई बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी प्रिपरेशन होगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट, आपको डिटरमाइन करना होगा द इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, what will be the information needs that to be reflected in the summary financial statement so that they are consistent in all material respect which represent a fair summary of the financial statement audited। because summary financial statement by their nature contain the aggregated information, because जो summary financial statement में क्या है उसमें क्या एक aggregated information है, limited disclosure है। there is what, there is the aggregated information है, limited disclosure है, that there is an increased risk that may not contain the information necessary so not be misleading in the circumstances। This risk establish criteria for the preparation of the summary financial statement do not exist। very important factor क्या है, what will be very important factor for determining the acceptability। कौन से factors है जो कि determine करेंगे, कौन से factor है जो कि determine करेंगे the acceptability, कौन से factors है जो auditors determination of acceptability of audit applied criteria को बताते हैं, कौन से factors है from the examiner point of view or from the examiner catch, there may be catch you may find in the examination कि directly questions comes from the factors, it may be 805 or 810। तो फैक्टर्स कौन से फैक्ट करते हैं, ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन व्हाट विल बी, कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो नेचर क्या एंटिटी का, पर्पस क्या है, द पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर्स कौन है ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो अप्लाइड क्राइटेरिया है विल रिजल्ट इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल नॉट बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टेंसेस, मिसलीडिंग ना हो। तो ये आ सकते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे, कौन से फैक्टर्स है, हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया, दैट व्हाट विल बी द नेचर, क्या होगा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द एंटिटी, द पर्पस ऑफ द एंटिटी। हम क्या बोलते हैं कि नेचर क्या होगा, व्हाट विल बी, कौन से फैक्टर्स है, हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। कौन से ऐसे फैक्टर्स है, हम क्या बोलते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। नेचर क्या होगा ऑफ द एंटिटी का, द पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, एंड हम क्या बोलते हैं द इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या जो अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मे नॉट बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टेंसेस। जो भी क्राइटेरिया हो गए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और बाय लॉ और रेगुलेशन सिमिलर टू द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी एक्सप्लेन हो गए ऐसे 210। In many such cases, the auditor may presume that such criteria are acceptable, where established criteria for the preparation of summary financial statement do not exist. Criteria may be developed हो सकता है by management, for example, based on a practice in a particular industry. If the auditor concludes that the applied criteria are unacceptable or unable to obtain the agreement of a management as discussed above, the auditor shall not accept the engagement to report on a summary financial statement unless required by law and regulation to do so. An engagement conducted in accordance with such a law and regulation does not comply with this standards. Accordingly, जो auditor की report होगी on the summary financial statement shall not indicate that the engagement was conducted in accordance with the SAs.
The auditor shall include appropriate reference to this fact in a terms of engagement. The auditor shall also determine the effect that this may have on the engagement to the audited financial statement from which the summary financial statement are derived. Adequate disclosure होंगे of the summarized nature of the summary financial statement and the identity of the audited financial statement may, for example, as provided by the title, such as summary financial statement, which is prepared from the audited financial statement for the year ended. आपको obtain करना है agreement of management that ये मैनेजमेंट जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो फैक्टर्स पता चल गए कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते थे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया, दैट इज नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, द पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, द स्पेसिफिक यूजर्स कौन है ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड उसके बाद हम जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसमें ये बात करते हैं, लास्ट में ये बात की जाती है, द लास्ट वन दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया है दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस, ऐसा करके कुछ। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ऑब्टेन करना है द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट वो एक्नॉलेज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोल रहे हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया जैसे उधर एफआरएफ होता है तो इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, यहाँ पे जो है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे टाइम जो वर्ड यूज किया जाएगा वो अप्लाइड क्राइटेरिया होगा। ओके, to make the audited financial statement available to the intended users of the summary financial statement without undue difficulty, आपको क्या करना है, what you need to do is to make the audited financial statement available to the intended users of the summary financial statement. What you need to do is to make the audited financial statement available कराना है। आपको क्या करना है, आपको available कराना है, आपको क्या करना है, available कराना है, to make the audited financial statement available to the intended users of the summary financial statement without undue difficulty के। If law or regulation provide that the audited financial statement need not to be made available to the intended users of the summary financial statement and establishes the criteria for the preparation of summary financial statement to describe that law and regulation in the summary financial statement, the auditor's evaluation क्या जो audited financial statement available हो रही है to the intended users of the summary financial statement without undue difficulty, क्या ये available हो रही है to the users without undue difficulty के is affected by the factor के क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा क्लियरली फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम whom और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। तो हम क्या बोलते हैं, दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करेगा क्लियरली फ्रॉम वेयर, फ्रॉम whom एंड वेयर द from whom or where the audited financial statement are available. The audited financial statement are on public report। तो हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स इवैल्यूएशन क्या जो ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल किए जा रहे टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द विदाउट एनी डिफिकल्टीज अफेक्टेड बाय, ये अगेन वापस अफेक्ट कर रही है फॉलोइंग फैक्टर्स कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है क्लियरली फ्रॉम whom एंड वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, फ्रॉम whom और वेयर द हम क्या बोलते हैं, क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब कर रही क्लियरली, क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करी क्लियरली फ्रॉम whom और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। The audited financial statement are on public report. The management has established a process by which the intended users of the summary financial statement can obtain ready access to the audited financial statement. हमें इंक्लूड करना होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट इंडिकेट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन देम। एग्रीमेंट कीजिए विद द मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर। बट उससे पहले हमें एग्जामिनर ये फैक्टर्स पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्वियसली बट ऑब्वियस पूछ सकता है, तो हमें उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि कौन से, जब ऑडिटर ये बोले कि कौन से फैक्टर्स है विदाउट एनी डिफिकल्टी करके ऑडिटर्स इवैल्यूएशन के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अवेलेबल हो जाएंगे क्या टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना किसी एनी डिफिकल्टी के। तो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करेगा क्लियरली फ्रॉम whom और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। तो हम क्या बोलते हैं कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करेगा क्लियरली फ्रॉम whom और वेयर दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होगी। जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए ऑन आर ऑन अ पब्लिक रिकॉर्ड पर। तो हम क्या बोलते हैं कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करेगा क्लियरली फ्रॉम whom और वेयर दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑन अ पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए। द मैनेजमेंट हैज एस्टेब्लिश अ प्रोसेस बाय विच the intended
intended users of the summary financial statement can obtain ready access to the audited financial statement. हमें include करना होगा the auditor's report on a summary financial statement in any document that contain the summary financial statement and that indicate the auditor has reported on them. उसके बाद हम बोलते हैं agree कीजिए management on the form of opinion to be expressed on the summary financial statement. What will be the nature of procedures to be performed by the auditor? कौन से नेचर ऑफ प्रोसीजर्स होंगे, कौन से नेचर ऑफ प्रोसीजर होंगे विच इज टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर. तो ऑडिटर जो है वो शेल परफॉर्म करेगा द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड एनी अदर प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर नेसेसरी एज द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको इवेल्युएट करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको इवेल्युएट करना है क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है. तो यहाँ पे मार्क योर वर्ड्स, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है देयर समराइज नेचर, क्या वो एडिक्वेटली. तो हमें क्या है नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है. What will be the nature of procedures to be performed by auditor? What will be the nature of procedures to be performed? What will be the nature of procedures to be performed? हम क्या बोलते हैं that what will be the nature of procedures to be performed by auditor? What will be the nature of procedures to be performed by auditor? तो आप इवेल्युएट कीजिए क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो यहाँ पे एसएफएस का मतलब है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एडिक्वेटली, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है देयर समराइज, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी of the audited financial statement. तो हम क्या बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, क्या होगा नेचर ऑफ प्रोसीजर्स. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या होगा टू बी परफॉर्म. आपको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है, आपको क्या करना है इवैल्यूएट करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एडिक्वेटली, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी देयर समराइज नेचर, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी देयर समराइज नेचर ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नंबर 1, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है द समराइज नेचर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है द समराइज नेचर. हम क्या बोलते हैं क्या एडिक्वेटली, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी देयर समराइज नेचर, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद हमारा आता है नंबर 2. नंबर 2 पे हम क्या बोलते हैं क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एक्म्पनीड बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल, इवैल्यूएट वेदर दे डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम हुम. आपको डिस्क्राइब करना है फ्रॉम हुम एंड वेयर, फ्रॉम whom and where. हम क्या बोलते हैं from whom and where, from whom and where the audited financial, from whom and where the audited financial statement are available, from whom or where the audited financial statement, from whom or where the audited financial statement are available. And the law and regulation, law and regulation, law and regulation क्या that specify that the audited financial statement need not be made available. Law and regulation need not be लॉ एंड रेगुलेशन. हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा लॉ एंड रेगुलेशन है, लॉ एंड रेगुलेशन नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर, to the intended users of the summary financial statement and establishes the criteria for the preparation of
दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम क्या बोलते हैं फ्रॉम whom और where the audited financial statement, from whom or where, तो what will be the nature of procedures to be performed by the auditor, what will be the nature of procedures, हम क्या बोलते हैं that what will be the nature of procedures to be performed by the auditor, nature of procedures to be performed, क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द समरी द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम क्या बोलते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, पापड़ी क्या हो रहा है, ये रहा, तो हम क्या बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर रिलेटिंग टू द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, क्या तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है, क्या चीजें डिस्क्लोज करी, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है, देयर समराइज नेचर, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी, देयर समराइज द नेचर ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी द समराइज नेचर ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम whom एंड वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, हम क्या बोलते हैं फ्रॉम whom और वेयर, कहाँ से और कैसे, मतलब फ्रॉम whom और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी, हम क्या बोलते हैं फ्रॉम whom और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, फ्रॉम whom और वेयर, फ्रॉम whom और वेयर, हम क्या बोलते हैं फ्रॉम whom और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, from whom or where the audited financial statement are available, from whom, हम क्या बोलते हैं from whom or where, from whom or where the audited financial statement are available, and the law and regulation specifies that the audited financial statement need not be made available to the intended user of the summary financial statement that establishes the criteria for the preparation of the summary financial statement, evaluate कीजिए कि summary financial statement adequately disclose करिए, वापस वही लाइन आ गई, पहले हमने बोला कि adequately disclose करिए the summarized nature of the audited financial statement, कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करिए द अप्लाइड क्राइटेरिया, तो अप्लाइड क्राइटेरिया वाला पॉइंट डिफरेंट है। अप्लाइड क्राइटेरिया वाला देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट रिलेटिंग टू द अप्लाइड क्राइटेरिया, तो हम क्या बोलते हैं अप्लाइड क्राइटेरिया वाला पॉइंट डिफरेंट है, तो आपको इवेल्युएट करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इवेल्युएट करना होगा, हमें क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, हमें क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें इवेल्युएट करना होगा क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है द अप्लाइड क्राइटेरिया, उसके बाद हम क्या बोलते हैं हमें कंपेयर करना है द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एग्री है और कैन बी क्या वो रिकैलकुलेटेड हो सकती है फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेल्युएट कीजिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर क्या है इन अकॉर्डिंग्स विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, ये था हमने पॉइंट पढ़ लिया कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है अप्लाइड क्राइटेरिया और क्या ये प्रिपेयर क्या इन अकॉर्डिंग्स, दोनों डिफरेंट पॉइंट है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि whether adequately disclose कर रहा है the applied criteria or whether prepare in accordance with applied criteria, तो there are two different point, तो ये दोनों different point है कि prepared क्या है in accordance with the applied criteria, उसके बाद हमारा आ जाता है ये सारा हो गया, उसके बाद हमें कंपेयर करना है द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एग्री हो जाएगी, क्या वो रिकैलकुलेटेड होगी फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद आप इवेल्युएट कीजिए, आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इवेल्युएट करना है क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर क्या है, क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम क्या बोलते हैं क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर क्या इन अकॉर्डिंग्स विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, इवेल्युएट कीजिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया इन अकॉर्डिंग्स विद अप्लाइड क्राइटेरिया, इवेल्युएट कीजिए इन व्यू ऑफ द पर्पस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एट एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन, क्या वो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन बताती है एंड सो एट नॉट टू बी मिसलीडिंग इन द मिसलीडिंग ना हो सर्कमस्टेंसेस, इवेल्युएट कीजिए इन व्यू ऑफ द पर्पस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
हमें क्या करना होगा, हमें इवेल्युएट करना होगा. व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज टू इवेल्युएट करना है इन व्यू ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंफॉर्मेशन है एट एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन. हम क्या बोलते हैं, क्या वो एट एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन, क्या वो एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे है एंड दैट नॉट बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस. क्या जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल की जा रही है टू द इंटेंडेड यूजर्स को बिना किसी डिफिकल्टी के, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड दैट दे नीड नॉट बी मेड अवेलेबल एंड एस्टेब्लिशेस द क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिस्कस ऑलरेडी. तो ये सारी चीजें हो जाती है. तो हम क्या बोलते हैं, आपको इवेल्युएट करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है, देयर समराइज नेचर अप्लाइड हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया में हो, एंड इन अकॉर्डेंस मतलब प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया नंबर वन, और एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है अप्लाइड क्राइटेरिया और जो इंटेंडेड यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टी. उसके अलावा हम 2-3 पॉइंट फ्रॉम वेयर एंड होम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे अवेलेबल है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन नीड बी made available to the intended users of summarized financial statement and establishes the criteria for the preparation. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि appropriate level of aggregation and so as not misleading ना हो in the circumstances. उसके बाद आता है what will be the form of opinion. Form of opinion क्या है, when the auditor has concluded that an unmodified opinion on the summary financial statement is appropriate, the auditor's opinion shall, unless otherwise required by law and regulation, use one of the following phrases. The accompanying summary financial statement are consistent होनी चाहिए in all material respect, होनी चाहिए with the audited financial statement in accordance with the applied criteria. तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी कंपेनिंग समरी है ऑफ द फाइनेंशियल, हम क्या बोलते हैं जो भी कंपेनिंग समरी है, जो भी कंपेनिंग समरी है, हम क्या बोलते हैं दैट जो भी कंपेनिंग समरी है. करेक्ट. हम ये बोल रहे हैं कि जो भी कंपेनिंग समरी है, जो भी कंपेनिंग समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट व्हाट, तो हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारी कंपेनिंग समरी है, जो भी हमारी कंपेनिंग समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट हो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारी कंपेनिंग समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग्स में होनी चाहिए. जो भी कंपेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज फेयर समरी होनी चाहिए ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. तो हमारी जो कंपेनिंग समरी है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंसिस्टेंट हो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, हम क्या बोलते हैं वो कंसिस्टेंट हो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. कि जो भी हमारी कंपेनिंग समरी है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. और जो भी हमारी कंपेनिंग समरी है दैट आर अ फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. और जो भी हमारी कंपेनिंग समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है द वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टर्म्स दैट आर डिफरेंट हो फ्रॉम दोज डिस्क्राइब अबव एज द ऑडिटर शेल, तो फॉर्म कैसे करेंगे ओपिनियन, हम देखेंगे क्या हमारी कंपेनिंग समरी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या जो कंपेनिंग समरी है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो कंपेनिंग समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में विद इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. क्या जो कंपेनिंग समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वो क्या है फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. जो भी लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करेगा द वर्डिंग्स ऑफ द ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब अबव द ऑडिटर शेल apply करेगा procedure discuss earlier and any further procedure necessary to enable the auditor to express the prescribed opinion and evaluate क्या जो users of summary financial statement might misunderstand the auditor's opinion on the summary financial statement, and if so whether the additional explanation in the auditor's report on the summary financial statement can mitigate the possible misunderstanding.
If the auditor concludes that the additional explanation in the auditor's report on a summary financial statement cannot mitigate the possible misunderstanding, the auditor shall not accept the engagement unless required by law and regulation to do so. An engagement conducted in accordance with the law and regulation does not comply with this essays. Accordingly, the auditor's की जो भी report होगी on the summary financial statement shall not indicate that the engagement was conducted in accordance with the essays. Auditor's report on a summary financial statement. What are basically the elements of the auditor's report? The auditor's report on the summary financial statement shall include the following elements. That is a title that is clearly indicating that it is a report of the independent auditor. Then an addressee. An addressee is the summary of financial statement is not as an addressee of the auditor's report on the audited financial statement. The auditor shall evaluate the appropriateness of using a different addressee. Factors that may affect the auditor's evaluation of the appropriateness of the addressee of the summary financial statement includes the terms of the engagement, the nature of the entity, what will be the terms of the engagement, the nature of the entity, the purpose of the summary financial statement. Identification कैसे होगा? Summary financial statement on which the auditor is reporting, including the title of each statement, including in the summary financial statement. When the auditor is aware that the summary financial statement will be included in a document that contains information other than the summary financial statement and the auditor's report thereon, the auditor may consider if the form of presentation allow identify कीजिए the page number on which the summary financial statement are presented. This identifying the page number on which the summary financial statement are presented. This help the reader identify the summary financial statement to which the audit report relates. Identification कीजिए of the audited financial statement का a clear expression of an opinion. A statement which indicating that the summary financial statement do not contain all the disclosures required the financial reporting framework applied in the preparation of financial statement and that reading the summary financial statement and the auditor's report thereon is not a substitute for reading the audited financial statement and the auditor's report. If required, then a statement that the summary financial statement or जो भी audited financial statement do not reflect the effect of event that occurs subsequent to the date of auditor's report on the audited financial statement. Reference to the auditor's report on the audited financial statement, the date of the audit report, and the fact that an unmodified opinion is expressed on the audited financial statement. A description of management responsibility for the summary financial statement explaining that management is responsible here for the preparation of summary financial statement in accordance with the applied criteria के accordance में. A statement that auditor is responsible for expressing an opinion based on the auditor's procedures conducted in accordance with the essays on whether the summary financial statement के consistent है in all material respect or a fair summary of the audited financial statement. जो भी ऑडिटर का सिग्नेचर होगा along with the firm registration number where applicable and the membership number assigned by the Institute of Chartered Accountant of India beside union is required to be stated. The date of the auditor's report. The auditor shall date the auditor's report on a summary financial not earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, including the evidence that the summary financial statement have been prepared and those with the recognized authority have asserted that they have taken the responsibility for them, and the date of the auditor's report on the audited financial statement. नाउ दी प्लेस ऑफ सिग्नेचर. तो कौन सा अब ये आ जाता है, ये यहाँ से कुछ पार्ट अमेंडेड है. मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ईओएम पैरा एंड अदर पैरा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Reference to the auditor's report on the auditor's audited financial statement when the auditor's report on audited financial statement include a qualified opinion in accordance with SA 700 parts. An EOM para or an OM para in accordance with the SA 706. A material uncertainty related to going concern action in accordance with SA 570. Key audit matter that is 701 and a statement that describes that uncorrected material misstatement information in accordance with SA 720. A statement that describes an uncorrected material misstatement. A statement that describes the uncorrected material misstatement of other information in accordance with SA 720. A statement जो कि describe करेगी uncorrected material misstatement of the other information in accordance with this. And the auditor is satisfied that the summary financial statement are consistent in all material respect with or a fair summary of audited financial statement in accordance with the applied criteria. The auditor's report on the summary financial statement shall, in addition to the element discussed above, state that the auditor's report on the audited financial statement includes a qualified opinion, an EOM para, the OM para, a material uncertainty related to going concerns action, communication of the key audit matter, a statement that describes uncorrected material misstatement of other information.
describe किया है कि the basis for the qualified opinion on the audited financial statement and the effect thereof in any on the summary financial statement. The matter referred to the OM para or the OM para or the material uncertainty related to going concern section in the auditor's report of the financial statement and the effect thereof, if any, on the summary financial statement. The uncorrected material misstatement of other information and the effect thereof, if any, on the information included in the document containing the summary financial statement and the auditor's report thereon. When the auditor's report on the audited financial statement contain an adverse or disclaimer of opinion, the auditor's report on the summary financial statement shall, in addition to the element, state that the auditor's report on the audited financial statement contain an adverse opinion and a disclaimer of opinion. Describe the basis for the adverse opinion and the disclaimer of opinion. State that as a result of adverse opinion or a disclaimer of opinion on the audited financial statement, it is inappropriate to express an opinion on the summary financial statement. Modified opinion on the summary financial statement. If the summary financial statement are not consistent in all material respect with or not a fair summary of audited financial statement in accordance with the applied criteria and management does not agree to make the necessary changes, the auditor shall express an adverse opinion of the summary financial statement. Restriction on distribution and use of alerting the readers on the basis of accounting. When distribution and use of the auditor's report on the audited financial statement is restricted, or the auditor's report on the audited financial statement alert the readers that the audited financial statement are prepared in accordance with the special purpose framework, the auditor shall include a similar restriction or alert in the auditor's report on the summary financial statement. Then comes the comparatives. If the audited financial statement contain comparatives but the summary financial statement do not, the auditor shall determine whether such omission is reasonable in the circumstances of the engagement. The auditor shall determine the effect of unreasonable omission on the auditor's report on the summary financial statement. If the summary financial statement contain comparative that were reported on by another auditor, the auditor report on the summary financial statement shall contain the matter as the 710 require the auditor to include in the auditor's report on the audited financial statement unaudited supplementary information which is presented with the summary financial statement. ऑडिटर को क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा क्या जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो भी प्रेजेंट की है विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द एंटिटीज प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड from the summary financial statement, the auditor shall ask the management to change the presentation of unaudited supplementary information. If management refuses to do so, the auditor shall explain in the auditor's report on the summary financial statement that such information is not covered by that report. Then comes information in document contain the summary financial statement. The auditor shall read the information included in a document containing the summary financial statement and the auditor's report thereon and consider क्या कोई material inconsistency है between the information and the summary financial statement. If the auditor identify a material अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई कर लेता है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, ऑडिटर डिस्कस करेगा द मैटर विद मैनेजमेंट के साथ, डिटरमाइन करेगा कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट and the auditor's report thereon need to be revised. If the auditor determined that the information need to be revised and management refuses to revise the information as necessary, the auditor shall take appropriate action in the circumstances, including considering the implication for the auditor's report on the summary financial statement. Then आता है हमारा then next come that is the auditors association. So what will be the auditors association, क्या होगा? If the auditor become aware that the entity plan to state that the auditor has reported on the summary financial statement in a document that containing the summary financial statement but does not plan to include the related auditor's report, the auditor shall require the management to include the auditor's report in a document. If management does not do so, the auditor shall determine and carry out other appropriate action which is designed to prevent management from inappropriately associating the auditor with the summary financial statement in that document. The auditor may be engaged to report on the financial statement of an entity while not engaged to report on a summary financial statement. If this is the case, the auditor become aware of the entity plan to make a statement in a document that refer to the auditor and the fact that the summary financial statement are derived from the financial statement audited by the auditor, and the auditor shall satisfy that the reference to the auditor is made in the context of the auditor's report on the audited financial statement and the statement does not give the impression that the auditor has reported on the summary financial statement.
If A or B are not met, the auditor shall request management to change the statement to meet them or not to refer to the auditor in a document. Alternatively, the entity may engage the auditor to report on a summary financial statement and include the related auditor's report in a document. If management does not change the statement, delete the reference to the auditor and include an auditor's report on a summary financial statement in a document that containing the summary financial statement, the auditor shall advise the management that the auditor disagree with the reference to the auditor and the auditor shall determine and carry out other appropriate action designed to prevent management from inappropriately referring to the auditor. Then come what will be the timing of work and events subsequent to the date of the auditor's report on the audited financial statement. The auditor's report on the summary financial statement may be dated later than the date of auditor's report on the audited financial statement. In such a cases, the auditor's report on the summary financial statement shall state the summary financial statement and the audited financial statement do not reflect the effect of events that occur subsequent to the date of the auditor's report on the audited financial statement. The auditor may become aware of the fact that existed at the date of auditor's report on the audited financial statement, but which of the auditors previously was unaware in such a cases. The auditor shall not issue the auditor's report on a summary financial statement until the जो भी auditor's consideration of such a fact in relation to the audited financial statement in accordance with SA 560 has been completed. When the auditors report on a summary financial statement after the completion of audit of the financial statement, the auditor is not required to obtain additional audit evidence on the audited financial statement or report on the effects of event that occur subsequent to the date of auditor's report on the audited financial statement, since the summary financial statement are derived from the audited financial statement. Then यहाँ पे हमारे दो illustration आ जाते हैं कि जो CA मधुर है, that the same is auditor of a company, has issued audit report dated 15 June of a particular year. The audit report on a summary financial statement derived from such audited financial statement is dated on 15 July. Issue किया audit report dated 15 June. और जो ऑडिट रिपोर्ट है समरी डिराइव फ्रॉम सच ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हमने पहले हमारा मेन ऑडिट किया हमने ऑन 15 जून, फिर उससे डिराइव किया अंडर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 15 जुलाई, एक महीने बाद. तो ऑब्वियसली समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लेटर वाली डेट ही होगी फ्रॉम द ऑडिटेड. डिस्कस वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटर इन सच अ सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बताना है हमें कि कोई एडिशनल रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंसिडर कीजिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू बाय सीए मधुर फॉर द अबव सेड कंपनी कंटेन्स क्वालिफाइड ओपिनियन. कैन यू इशू अनमोडिफाइड ओपिनियन? अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है क्या आप अनमोडिफाइड ओपिनियन इश्यू कर सकते हो? तो द आंसर इज नो. अगर क्वालिफाइड डिस्क्लेमर है तो, अगर एडवर्स डिस्क्लेमर है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है एक्चुअली. कैन यू इशू एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद ये एक इंटीग्रेटेड सिनेरियो वाला जो क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स हैं. तो पहले तो हम वो दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें हमें एक तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आनी चाहिए. एक फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया वो, और एक और जो बीच में फैक्टर आया था वो. तो तीन क्वेश्चन तो यहाँ पे मतलब हमें याद होने चाहिए बिकॉज वो आने के चांसेस है. तो अब हमारा 5th 6th जो क्वेश्चन बच रहा है इसको हाईलाइट नहीं करते बिकॉज ये तो बच रहा है. अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज the auditor report on a summary financial statement derived from the audited financial statement is dated 15 July of that particular year. However, the audit report on the financial statement is dated on 15 June of that year. In the above situation, the audit report on the summary financial statement should state that the summary financial statement and the audited financial statement do not reflect the effect दोनों ही do not reflect the fact of the event that occurred subsequent to the date of auditor's report on the audited financial statement. Okay. उसके बाद if the auditor is satisfied that the summary financial statement are consistent in all material respect with a fair summary of the audited financial statement in accordance with applied, he can issue an unmodified. अगर auditor satisfied कि जो summary financial statement है वो consistent है in all material respect, in all material respect fair summary present करता है in accordance with the applied criteria, तो वो issue कर सकता है unmodified opinion. However, where the auditor's report on an audited financial statement contain a qualified, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हो कि कंसिस्टेंट हो, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट हो, फेयर प्रेजेंटेशन हो, फेयर समरी हो, तो वो अनमोडिफाइड. बट अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द समरी शैल आल्सो कंटेन द फॉलोइंग स्टेट दैट. अगर बट अगर आपके यहाँ मतलब पहले तो हम बोल रहे हैं कि ऑडिटर जो है अनमोडिफाइड तो देता है, बट वो कब देता है
जब जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो, जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में हो, और फेयर समरी हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और क्या हो, फेयर समरी हो इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड, तो वो इशू कर सकता है क्या, अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो क्या इशू कर सकता है, however the auditor's report on audited financial statement contain a qualified, बट अगर आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्वालिफाइड है, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड है, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्या है, qualified है, the auditor's report on a summary financial statement shall also contain the following, state that the auditor's report on audited financial statement contain a qualified, तो आपको बताना होगा अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड है तो state that the auditor's report on the audited financial statement, तो आपको ये बताना होगा अगर आपकी रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो कंटेन, हाउएवर व्हेन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट अगर आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन हो ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो कंटेन द फॉलोइंग, स्टेट दैट द कि जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्राइब दैट द बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो बेसिस है आप बताइए कि क्या है, स्टेट दैट द ऑडिटर, जो ऑडिटर रिपोर्ट है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन है, और जो भी आपकी बेसिस है फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इफेक्ट देयर ऑन द समरी, और क्या इफेक्ट होगा ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको बताना होगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट कंटेन अ क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस क्या होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन एंड द क्वालिफाइड ओपिनियन एंड द रिपोर्ट क्या है इसका, एंड द इफेक्ट क्या ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। उसके बाद हम अगर थ्योरेटिकल में देखें तो in the given situation, Mr. BK has been engaged by XYZ to report on a summary derived from the financial statement audited by him in accordance with the essay. Mr. BK wanted to determine whether the applied criteria are acceptable before. 810 बोलता है engagement to report on a summary financial statement before accepting the engagement to report on a summary. The auditor shall determine करे applied criteria acceptable. Applied criteria refers to the criteria which is applied by the management in the preparation of summary financial statement. कौन से factors है for determination, that is nature क्या है entity का, the नेचर क्या है, द पर्पस क्या है, द इंटेंडेड यूजर्स क्या है, कौन है ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अप्लाइड क्राइटेरिया जो है, एंड क्या जो अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा 810 इंगेजमेंट रिपोर्ट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा हमें एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, पीछे से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 810, कौन सा इसका जो कौन सा है वो जो हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एलिमेंट नहीं होता है, क्या यूएम नहीं होता, ओएम नहीं होता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरेज फाइनेंशियल और की ऑडिट मैटर, तो कौन सा वाला नहीं होता। तो फिफ्थ का आंसर है हमारा, फिफ्थ का एमसीक्यू का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर है डी। कौन सा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता, तो डी वाला नहीं होता है। अब डी वाला आंसर क्या है देखते हुए चलते हैं। एग्जाम में हम बहुत मिरेकल तो नहीं हो जाएंगे, जितना पढ़ा हुआ उतना रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ऑडिट मैटर जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है, 810 में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, इज नॉट, कौन सा नहीं आता है, तो की ऑडिट मैटर्स नहीं आता है। उसके बाद आ रहा है हमारा which of the following para is most appropriate to be included under the heading opinion in the auditor's report, इनमें से सबसे appropriate कौन सा होगा। In our opinion, जो summary financial statement derived from the audited financial statement of this for the year ended has a fair summary of those financial statement in accordance with the accounting policies, acceptable principle नहीं, ये तो नहीं होगा। फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, फोर्थ वाले का है ए।
In our opinion कि जो summary financial statement जो derive हुई है from the audited financial statement of this for the year in accordance with the accounting policy and standards specified in as well generally accepted in India and to the extent applicable. तो इसका आंसर ये है. Which of the following part is most appropriate to be included under the heading auditor's responsibility in the auditor's report? इसमें ऐसा क्या डिफरेंट लग रहा है इन आवर ओपिनियन की जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि डिराइव है फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर द ईयर एंडेड आर अप्लाइज ओनली दिस विल बी व्हाट समथिंग. Our responsibility is to express an opinion on the average financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with the standards on auditing ऐसे 810. Engagement to report in a summary financial statement issued by the Institute of Chartered Accountant of India. हम क्या बोलते हैं हमारी जो responsibility है that is to express an opinion हमारी कि हमें opinion देनी है on the summary financial statement which were conducted in accordance with the standards on auditing. Engagement to report in a summary financial statement which is issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Which of the following statement in reference to the average financial statement is not in accordance with ऐसे 810 के accordance में नहीं है? सेकंड वाले का क्या होगा? सेकंड का सी और फर्स्ट का ए है. It should be stated in the auditor's report कि जो average financial statement have been compared with the related information in the audited financial statement to determine कि जो average financial statement agree है and can be recalculated है from the related information in the audited financial statement. The auditor may presume the criteria applied by the Board of Trustees in the preparation of average financial statement are accepted. Okay. So with this, we have completed the entire specialized area essay. So with this, we have completed our entire essay 800 specialized area essay 800. Then comes the essay 805 and then essay 810. Essay 800 basically deals with the special consideration, the audit of financial statement in accordance with the special purpose framework. उसके बाद then comes the essay 805 that is again special consideration, audit of the single financial statement or the elements accounts or items of the financial. फिर हम क्या बोलते हैं essay 805 that is the audit of financial statement, audit of single financial statement, audit of single financial statement items, accounts items of the same. मतलब कि audit होगा of the single financial statement or the elements
amount or items of financial statement, और उसके अलावा then comes the SA 810, that is engagement to report on a summary financial statement. And we have covered each and every topic of this standard, so hope that this will be fruitful for us in our exams. All right.